Hello, you're watching Hornbill TV's Nordic Express Bulletin. I'm Naomi Kikon. The autumn session of the Legislative Assembly began on Thursday and will continue till August 30. Security measures have been strengthened, especially in the Dispur area, following a series of recent explosive discoveries in various parts of the state, including Dispur last gate adjacent to the Assembly premises. The session opened with a one-hour question hour, providing a platform for members to raise pressing issues. Following this, the state government presented the supplementary demands for grants for the fiscal year 2024-25, which outline the additional budgetary provisions required to meet the state's financial needs. The state government has notified the Assembly Secretariat that 13 government bills are required for tabling during the autumn session. Meanwhile, the entire opposition staged a walkout after the rejection of their 3 adjournment motions. When the motions were rejected by Speaker Biswajit Mary, members of Congress AIUDF, CBIM and Raijor Dal went to the well of the House with placards and shouted slogans in support of their demands. Opposition raised the issue of exorbitant charges through smart meters, proposal on the restriction of land sale purchase between 2 communities. देख लीजिए, आसाम में स्मार्ट मीटर इशू में बहुत हल्ला चिल्ला हो रहा है गांव-गांव में। आसाम इंडिया का सबसे ज़्यादा स्मार्ट मीटर लगाना जो स्टेट है ना, सबसे ज़्यादा स्मार्ट मीटर अभी तक लगाया हुआ है। 25 लाख 36% कस्टमर का स्मार्ट मीटर लगा दिया। लेकिन जब लगा लिया तो देखा है कि स्मार्ट मीटर ने बहुत बिल लाया है, तो इसीलिए इसका खिलाफ गांव-गांव में अभी पूरा जुलूस चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, इसका खिलाफ मूवमेंट चल रहा है। तो आज हम लोग जितना हम लोग का अपोजिशन एमएलएस है, कांग्रेस, सीपीआईएम, राइजर दल, हम लोगों ने मिल के आज सिर्फ स्मार्ट मीटर के खिलाफ हम लोग असेंबली ने हम लोगों ने एडजॉर्नमेंट मोशन लाया था। हम लोगों ने कोशिश किया था गवर्नमेंट को समझाने के लिए कि ये स्मार्ट मीटर बंद करना चाहिए। तो हम लोग इसीलिए स्मार्ट मीटर बंद करने का जो ऐलान दिया है, हम लोगों ने डिमांड किया है कि स्मार्ट मीटर बंद करना पड़ेगा, नहीं तो असम में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगा, लोगों ने कभी नहीं मानेंगे। तो इसीलिए हम लोग स्मार्ट मीटर बंद करने के लिए लड़ाई चालू रखेंगे। दुर्भाग्य है, आसाम के मुख्यमंत्री खुद लॉयर है, लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके एक लैंड बिल अमेंडमेंट बिल ला रहे थे, जहाँ लाके कि बरपेटा में, बटद्रोआ में, माजुली में फला जगह यहाँ मुसलमान ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, इस तरह के एक बिल वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे। हमने इसका विरोध किया, पुरजोर विरोध किया विधानसभा में कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके ये बिल को इंट्रोड्यूस करना, ये किसी तरह इसको नहीं माना जा सकता है। हमने स्पीकर से यही मांग किया था, आप इसको इंट्रोड्यूस मत कीजिए, आप इसको अलाउ मत कीजिए, लेकिन स्पीकर ने नहीं माना। हमने डिवीज़न मांगा था कि इस बिल को इंट्रोड्यूस ना करने की वजह से आप डिवीज़न दीजिए, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं दिया। हमने वॉकआउट किया है, हमने वहाँ इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई विधानसभा के अंदर ही। और ये दुर्भाग्य की बात है, आसाम जैसे स्टेट से यहाँ एक बिल इस तरह के बिल ला रहे हैं जो बिल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में बसने वाले हर इंडिया के सिटीज़न को किसी भी जगह जाके ज़मीन खरीदने का, बेचने का अधिकार है। लेकिन मुख्यमंत्री को कहाँ मिल गया कि बरपेटा के 5 किलोमीटर के ये जगह में वो कम्युनिटी नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, और बटद्रोआ में नहीं कर पाएंगे। जो हिंदू मुसलमान करना और कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ जाके एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल को इंट्रोड्यूस करना, इसका हमने विधानसभा के अंदर भी उसके मुखालफत की और बाहर भी हम कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ करेंगे। अभी नहीं लाया रिपीलिंग उन्होंने, मेरी जन शायद आगे लाएंगे, उसका भी हम खिलाफ करेंगे। So many bills has been introduced. One very important bill to protect land. We have decided, our government has decided to bring a law so that our indigenous people can save our lands. That is very important. Opposition are very, very unhappy, but obviously we are happy. Assamese people are happy. That's why we are bringing this bill. It will be passed. I have said them, see what they want. They said it is against the constitution. I have said, being parliamentary affairs minister, I said
that you don't need one law in the country. You don't need UCC. Basically, my friend from AIDF and Congress, they said it is a violation of Constitution. Then I said that you don't want UCC. You need separate law. So definitely we have brought a separate law. No Muslim will be able to purchase land of Hindu without permission of the chief minister. Even Hindu won't be able to purchase. That is very normal, because we need to protect our lands. Because Assamese people, Assamese indigenous people and Indian people who resides in Assam are in danger. So we'll have to protect our people. Opposition party in Manipur Congress on Thursday held a protest against the alleged mega scam, which was revealed by US-based Hindenburg Research, and demanded probe into the matter. Congress leaders and workers from PCC, DCC, BCC and different frontal organizations marched to Enforcement Directorate office in Imphal. Addressing the national media and regional-based media channels, the PCC President K. Meghachandra demanded for joint parliamentary committee to investigate into the scam and for the immediate removal of SEBI chairperson. In response to the ongoing severe flood crisis, Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha announced on Thursday that 11 teams from the National Disaster Response Force are being dispatched to the state from Assam and Arunachal Pradesh to aid in rescue operations. In addition, helicopters will be deployed to evacuate individuals stranded in flooded areas. Dr. Saha made his statement following a phone call with Union Home Minister Amit Shah, who assured the swift dispatch of rescue teams. Expressing gratitude to the Home Minister for the quick response, Dr. Saha affirmed that the state's administrative machinery has been working tirelessly to assist those in distress. He also shared that additional boats will accompany the NDRF teams to enhance rescue efforts. According to the State Disaster Management Report, over 34,000 people have been relocated to relief camps across Tripura. The ongoing floods and landslides have resulted in 10 fatalities, with 2 others injured due to the heavy rains. ভয়াবহ অবস্থা তো আগে হয়নি, আমি একটা কথাই বলবো, কেউ যেন আতঙ্কিত না হয়। এবং আমরা এর আগেও বারংবার মাইকিং করেছি যে সবাই যেন চলে আসে, ঘর থেকে চলে আসে। অমরপুরের অবস্থা একটু খুব বাজে অবস্থা সেখানে। তো আজকে সকালে আবার আমি মাননীয় হোম মিনিস্টারের সাথে কথা বলে উনি আশ্বস্ত করেছেন এবং উনি অনেকগুলো 2টো হেলিকপ্টার পাঠাচ্ছেন যাতে এয়ারলিফটিং করা যায়। তাছাড়া এনডিআরএফ টিম অনেকগুলো পাঠাচ্ছে। আর ভোটের কথা আমি বললাম, আবার যে আমাদের ভোটগুলো আছে সেগুলো তো একটু বাদে এগুলো সব পৌঁছে যাবে। তো সবাই সহযোগিতা করছে, আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সাথে আছে এবং আমাদের যারা এসডিআরএফ এনডিআরএফ ত্রিপুরাতে 2টো টিম আছে, সবাই মিলে কিন্তু আমরা মানে 24/7 আমরা আছি। আমিও সারা রাত্র ধরে মনিটর করছিলাম। তো এখন তো ঘুমের বিষয় নয়, তো ন্যাচারাল ক্যালামিটি ভেরি ডিফিকাল্ট না, তো এটাকে তো আমাদের হাতে নেই। তবুও চেষ্টা করছি সব জায়গায়। এখন আবার যাব অফিসে বসে আবার মনিটর করব সব জায়গায় কি হচ্ছে। কন্টিনিউয়াস মনিটরিং চলছে। কোথাও কোনো লিকেজের খবর না, লিকেজ কি নেই। আমার সাথে একটু আগে সেক্রেটারি মহোদয়রা এসেছিলেন, বাড়িতে কথা বলেছেন যে এটা অ্যাকচুয়ালি লিকেজ না, কিন্তু যেখানে লিকেজ হচ্ছে সেগুলোকে ওরা বন্ধ করছে। মানে এরকম অ্যালার্মিং কিছু না, কিন্তু ডেঞ্জার লেভেলের অনেক উপরে জল যাচ্ছে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিস, যে ডেঞ্জার লেভেল আছে তার থেকে জল বেশি উপরে যাচ্ছে। না, ওইটা তো দিতেই হবে, এছাড়া তো উপায় নেই। এটা তো অটোমেটিক্যালি স্লুইস গেট খুলে যায় যখন একটা মিনিমাম মানে লেভেলে ম্যাক্সিমাম লেভেলে চলে আসে, খুলে যায়। তো এটা খুললে অ্যাটলিস্ট এই দিকের চারিদিকে যখন ছড়িয়ে যায় তো প্রেশারটা কম থাকে। এটা তো সেইভাবেই চলে।
The Chief Minister of Assam, Himanta Biswa Sarma, on Wednesday said that the cabinet will be introducing a compulsory Muslim marriage and divorce registration bill. Addressing a press conference after a cabinet meeting at Dispur Janata Bhawan in Guwahati, Sarma stated that the procedures for Muslim marriage and divorce are overseen by a Qazi in accordance with the Muslim personal law. However, the state government have introduced a bill to the cabinet stipulating that no marriage involving individuals under 18 years of age will be registered. Furthermore, the authority for registration will be transferred from the Qazi to the sub-registrar. The Chief Minister has endorsed this proposal. Now, minor marriage will not be registered, he said. On Assam Land Revenue and Regulation, he said it will now include a significant update. The government has registered the tribal belt and block under the regulation, which initially included Chapter 10. Recently, Chapter 12 has also been added. CM stated that the iconic structures at Botua, Majuli and Barpeta Sadra, along with the Charaitio Maidam, will be protected, and that any structure that is at least 250 years old can be designated as an iconic structure. Furthermore, a 5-kilometer area surrounding these sites will also be preserved. The Chief Minister stated that under the new Protection Act, only families who have lived in a particular area for 3 generations will be allowed to sell or repurchase land under iconic structures. On the formation of a special committee led by Bijush Hazarika and Ranuj Peku to address the concerns of scheduled tribes and scheduled caste, he said the committee will work on the declaration of micro-tribal blocks and will seek input from the local population. Residents of native villages will be invited to decide if they wish to be included under this act and can register their village names accordingly. Chapter 12 is basically we have created a heritage belt and block. So, if there is any heritage structure, like for the outside people, like Kamakhya is a heritage structure, like the Namghar established by Srimanta Madhav Ded in Borpeta is a heritage structure. If that structure is 250 years old, then 5 kilometers of that structure will be declared as a protected area. And in protected area, the land purchase and sale can happen only within the family who has lived in that protected area for 3 generations. So it will go back to 1951 basically. देखिए हमारे जो मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे. आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा और उस बिल में पहले प्रावधान था कि माइनर का मैरिज भी रजिस्टर हो सकता है. आज से माइनर का शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. तो बेसिकली यही 2 प्रोविजन है. Basically child marriage. We want to attack on the child marriage. Now, if they want to do something, government can always acquire land. But only government can acquire land. They cannot do anything. So this will protect Majuli, because after Saraideo, our next idea is to go to UNESCO to declare Majuli as a World Heritage. So after bridge, which is coming in both sides, industry will come, establish industry in Majuli, then how it will be a World Heritage Site. So basically we are trying to protect the spiritual and cultural identity of Majuli. Now if the people of Majuli says, no, keep one area for industrialization, we are okay. That is why this bill only says that 250-year-old. Now, what are those structures that we are not identifying as of now? That we'll do in a due course of time. But we identified initially Borpeta, Bordua and Majuli. But list can go bigger. List can be bigger also. So, Saraideo Moidam can be included if the local people demands. Tomorrow Ronghor can be included if local people demands. Tomorrow Tolatal Ghar can be included if the local people demands. So, but we are not doing this right now. We are only identifying 3 areas. But this can become bigger and bigger, provided people willingly approach government.
After Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma announced that the state government would be introducing the compulsory registration of Muslim marriages and divorces bill, where a sub-registrar would be taking over the responsibility of registration of marriages from the Qazi, Congress leader Wazid Al-Chaudhry said the magistrate will never be able to take over the job of a Qazi and the party would oppose the bill. He, however, said they will support amending child marriage provision as they are also against it. AIUDF MLA Mazibur Rahman said the party will support the amendment of the bill, but if the government wants to repeal it, they will protest. He said they want to rectify the provision of child marriage. कर सकता है ये मैजिस्ट्रेट नहीं कर पाए जो धर्मीय जो कामकाज वो काजी कर सकता है काजी उन लोग ने काजी का नौकरी मिला है जिसका अरबिक क्वालिफिकेशन है इसीलिए काजी रहना जरूरी है तो इसके खिलाफ ना इसके खिलाफ हम लोग अपोज करेंगे ये बिल का अपोज करेंगे तो कोई अमेंडमेंट आने का और जो बाल्य विवाह चाइल्ड मैरिज इसके खिलाफ हम लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि चाइल्ड मैरिज हम लोग भी नहीं चाहते लेकिन ये जो मुस्लिम पर्सनल जो स्पेशल मैरिज एक्ट इसको अमेंडमेंट करने से वो शरीयत मुसलमान का जो शरीयत है उसके खिलाफ होगा Cabinet has passed act. They want to repeal the bill, Muslim Divorce and Marriage Act 1935. We support it. That to amend the bill. But if they want to repeal the bill, if they want to erase the bill, then we will protect it. We will fight against this decision. But the government says that it is the move to take or to stop. Say there is a provision that there is a child marriage provision also is there. We want to rectify this provision. This act we want to rectify. But it does not mean Assam Muslim Marriage and Divorce Act. It is for the Muslim people, Muslim community. Why this Mr. Himanta Biswa Sarma, Honorable Chief Minister of Assam, want to repeal this? Because he want to play the card of casteism. You want to play the card, play the card of communalism. This is the Muslims for that he want to just repeal it and want to show the Hindu people that I am repealing everything, every bill. Candidates from both the ruling BJP-led coalition and the opposition CPIM have officially filed their nomination papers for the upcoming Rajya Sabha by-election in Tripura. On Wednesday, the returning officer for the polls, Suituifru Mok, accepted the nomination for the state's lone Rajya Sabha seat, which will be contested on September 3. The BJP-led alliance, which includes the Indigenous People's Front of Tripura and Tripura Mota, has fielded BJP State President Rajiv Bhattacharjee as its candidate. Chief Minister Dr. Manik Saha, who accompanied Bhattacharjee along with ministers and MLAs, praised him as a dedicated and hard-working leader, expressing confidence in his performance if elected. আমি আমাকে এত বড় পরিসরে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমার দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাপতি আদরণীয় জেপি নাড্ডাজি, আমাদের গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহজিকে ধন্যবাদ জানাই যে আমার মতো এরকম ছোট কার্যকর্তাকেও এত বড় পরিসরে কাজ করার একটা সুযোগ করে দিয়েছে। আমি সকলের আশীর্বাদ নিয়ে এবং আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রিপরিষদ। That's all for now. Keep watching Hornbill TV.